After the tragic death of baby Mahi, one more shocking case of carelessness has come to the fore, this time in the Chuma village of Gurgaon. A 3-year-old boy, Sachin, fell into a pit the electricity department in Gurgaon had dug to install an electric pole. But even as the boy was rescued, the question is how long before authorities start performing their duties averting such incidents. After hours of frantic digging, Gurgaon Fire Brigade officials finally breathing a sigh of relief, rushing the 3-year-old Sachin into a waiting ambulance and hoping that it isn't too late. बच्चा नीचे 20-22-25 फुट के गहरे के अंदर 15 उसके अंदर उसको खुदाई थोड़ा करके नीचे खुदाई करके उस बच्चे को आराम से सेफ निकाल रहा है. बच्चा बिल्कुल ओके है, ठीक है. Rushed into the hospital, the child has been saved for now, a fact that authorities are only too glad to credit themselves for. जैसे हमें पता लगा कि चोमा गांव के अंदर बोरवेल में एक बच्चा गिर गया, तभी हमने अपनी फायर टीम को एक्टिव किया. वहां से बीरबल फायर अफसर और सुखबीर सिंह यादव दोनों तुरंत वहां पर पहुंचे और गांव वालों की मदद से उन्होंने बच्चे को ठीक ठाक निकाल दिया. Relieved that a near tragedy was averted, locals are ready to cut the authorities some slack. गांव और प्रशासन और आसपास के लोगों का सबका बड़ा सहयोग रहा. किसी ने हाथ से मिट्टी हटाई, किसी ने कस्सी से हटाई, जेसीबी बुला के और बच्चे को निकाल दिया गया है. बच्चा हॉस्पिटल में है. Evidently ignoring the fact that the tragedy could have been avoided had the ditch not been left uncovered. No lessons learnt even after Mahi's death. Just a week after Mahi fell into that pit, a similar incident coming from Gurgaon as a child of 3 years old fell into a pit. Despite the close shave, negligence on the part of the administration cannot be ignored. The pit dug for the installation of an electric pole was left unnoticed, uncovered. अपने बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ने 140 या 126 करोड़ के तकरीबन कोई प्राइवेट एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था काम का. तो वो लोग अपना जो है वो कोई यूबी करके कोई एजेंसी है, वो उन लोगों ने अर्थिंग के लिए ये गड्ढे को खोदा गया था. और इसमें मैं कहूँगा कि उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है कि उस गड्ढे को खोदने के बाद में उन लोगों ने उसको कवर नहीं किया और जिसमें ये बच्चा अब जो है शाम को गिर गया था. Sachin's tale bears shocking resemblance to another tragic tale that unfolded in another part of Haryana. 5-year-old Mahi died after falling into an 80 feet deep borewell left uncovered by the callous administration. Even though action has been taken against Aring officials, the question remains, why is the administration not as careful as it should have been even after Mahi's death? The nation might have forgotten Mahi's tragic end, but incidents after incidents reiterating the sheer apathetic attitude of the administration that has let them recur. A week after Mahi's death, clearly no lessons learned. Bureau Report, Times Now.